सपने सच होते हैं, बस देखते रहना जरूरी है। मंजिल तक हौसले पहुंच ही जाते हैं, बस चलते रहना जरूरी है। गिरकर जो खड़ा होता है वही आगे बढ़ता है। हार जीत के इस फिलॉसफी को आपकी भाषा में आपके लिए एक सरल अंदाज में लेकर आया हूं। हॉसिस्टेबल, जो जीता वही सिकंदर, उभरते भारत का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं ऑन बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉसिस्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। प्लीज वेलकम मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु और हमारे हॉसिस्टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। Are you really ready? आप बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, तब बहुत से लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे पेपर्स मिलकर बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बन जाते हैं। उन फाइल्स को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना एक बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। ऑलमोस्ट असंभव काम लगता है वो। तो इसी मुश्किल काम को आसान करने का तरीका आप जानना चाहेंगे? वो तरीका लेकर आ रहे हैं हमारे स्टार्टअप। प्लीज वेलकम विष्णु रमेश। So moving all the data from these pages into the convenience of your laptops is actually only one of the few things that we do. Hello horses, my name is Vishnu Ramesh. I'm the co-founder at Subtle.ai and we are looking to raise 2.3 crores in exchange for 6% of equity. डेटा ये हिंदी का भी कन्वर्ट हो जाएगा या अंग्रेजी का ही होगा खाली? At present only English, but over the next 1 or 2 years there is potential to get into. यार आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। I cannot, I apologize for that. No problem. That was just my way of telling you अगर हिंदी का डेटा भी ट्रांसफर आप कर दें मुंह से कोई बात, आप English But one very cool thing that we can do possibly over the next 1 year is we can enable Hindi speaking people to understand documents that are present in English using a translation layer. So let me start with the problem itself that we're trying to solve. It's actually a very well-known fact that documents are everywhere. With the amount of digitization that's happening and the growth of businesses itself in today's world, there's a huge volume of data, and we have also realized that there are specific industries where there's a very critical need to look at that information. A very simple example of this would be bankers in India, right? Because they have to be aware of all the RBI regulations that come out, and at the same time, they have to be aware of process manuals that clearly talk about how each different banking process has to be conducted. Similar relationships can be found between lawyers and contracts, but then also drug researchers and medical reports. What we also realized is that existing solutions that are present in the market today do not make the cut, in terms of the fact that they are not actually directly effectively able to help these users find information from documents. I can go over 3 of the most popular options right now that people use to find information. The first one would be the keyword-based search. So a keyword-based search would essentially be you open a PDF and everyone runs these Control F searches, right? Where you're directly able to put in keywords and find relevant answers from your documents. If you had a 20-page document, you would be able to find your information instantly. But what if it was a 100-page document or a 1,000-page document or many 1,000-page documents? Now over here, it's a huge manual overhead for anyone to find information from such a high volume of documents. The second option is semantic search solutions. When we say semantic, it basically means meaning-based. The key aspect of that is basically that the keyword that's used in the question does not matter. The core focus is trying to identify what the meaning itself of the sentence is and how similar a particular answer from the document is to a particular question that was asked. But this also does not make the cut, because the problem with semantic solutions is there's no clear domain focus and contextual understanding itself of the information. The third option is a subject matter expert. So a subject matter expert would be someone who understands all of your documents for you and is able to assist you with any kind of information requirement. So when we looked at all of this, we said, is it possible to create an AI solution that can read your documents for you? And that is where Subtlebot comes in, which is our product. So Subtlebot is a SaaS-based solution which lets our customers directly upload documents of their choice. And our ML technology can break down the document and feed all the information into the AI search engine.
What then happens is users can directly ask questions on top of the solution in the same manner that they would actually ask the question to the human expert. A very simple example of this would be, instead of asking the human expert, if they were to type out on the search and say something like, how many RTI appeals have gone to RBI? Our solution is able to get answers from when we had done this test, this was over a total set of around 4,000 pages, and we were able to get 12 results in 0.72 seconds. And the first answer that came had said that there were more than 15,000 requests and around 1,200 appeals that had been raised to RBI over the period of 2020 to 2021. What our product also does is we're able to show users their answers highlighted within their documents, which our customers usually use this to directly download the PDF with the highlighted answer for reference, or even read around the highlighted answer to get a little more contextual understanding of what they wish to look for. And our current targets that we're looking to hit is 100K in annual recurring revenue by the end of 2021, which is essentially 75 lakhs of annual revenue that's generated every year as a result of the engagements that we have. We believe we can achieve that target by closing 5 to 6 banks in the country and also 1 or 2 edtech partnerships, which is both sales funnels have already started and they're already in progress. As of 2022, the end of 2022, we would look to convert this into an annual recurring revenue of 300K or around 2.3 crores, which would come through more aggressive scaling across these two sectors, but then also initial entry into the US markets. इसी बीच डॉक्टर बिंद्रा, विष्णु आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका एनालिसिस सुन लेते हैं। डॉक्टर बिंद्रा। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विष्णु, आपके स्टार्टअप में कुछ अच्छी चीजें हैं। अगर इसमें बैंक्स को छोड़ करके अगर हम और इंडस्ट्री लाइंस के अंदर और फंक्शंस में जा सकें, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू व्हिच इज SaaS बेस्ड। पायलट आपने एक अच्छे ब्रांड से किया, इसीलिए आज इंटरेस्ट भी जनरेट हो रहा है आपके साथ डिस्कशन के अंदर, जो कि SBI से करना आपके लिए फेवर में है। पेटेंट महत्वपूर्ण रहेगा। अगर पेटेंट आपका डिस्कशन में आज आ जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंडीशनल इन्वेस्टमेंट सारे इन्वेस्टर्स के लिए सेफ हो सकता है। इसमें एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है अगर आप पेटेंट कर पाते हैं, और इस कंडीशनल डिस्कशन के साथ में अगर आप पेटेंट अचीव कर पाए, मुझे लगता है वहाँ इंटरेस्ट जनरेट हो पाएगा। नॉर्थ अमेरिका, UK, सिंगापुर, कनाडा, यहाँ जरूरत पड़ सकती है आपके प्रोडक्ट्स की आगे चल के। मुझे लगता है आपको मल्टीलिंगुअल अप्रोच पे जाना चाहिए। अगर आप किसी तरह से कस्टमर टारगेट सेगमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, लॉयर्स, ड्रग रिसर्चर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ केयर, BFSI सब में जा सकते हैं तो पॉसिबिलिटी और बिल्ड होती है। कस्टमर का एग्जिट बैरियर अच्छा है, जब वो इतना डेटा अपलोड आपके साथ कर लेगा, इतना काम कर लेगा, उसके लिए स्विच करना मुश्किल हो जाता है। फैंटास्टिक। आई थिंक कुछ अगर कंडीशनल इन्वेस्टमेंट की बात बने जहां पे पेटेंट को लेकर के और आपके अगले कमर्शियल वेंचर्स के रिजल्ट्स को देखते हुए मुझे लगता है संभावना है। यू शुड गो हेड फॉर योर पिच, बात करिए, और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। I just want to say one thing. Sure. So document search is the tip of the iceberg. If you just look at the banking sector right now, they're doing 125 million digital transactions per day. Over the next 5 years, that's expected to grow to 1 billion transactions per day. Now, in that case, what would happen is the amount of issues itself that are raised by users while they're doing digital banking would increase. And the amount of issues that have happened in the past, it will become more and more likely that a current issue someone is facing is very similar to a ticket that was already resolved in the past. Vishnu, I want to ask how soon or how easy will it be for you to convert this into or do this with Hindi or regional languages? So we have a media background and we have these lakhs of editions and newspapers digitized, but to be able to take out smart data out of it, how easy will it be to do that? So since it's Hindi literature that won't directly fall under our scope, at least at this point, but over the next 2 years, we expect to expand into Indian languages. Numbers के ऊपर सवाल है। Yes, sir. Simple, straight. You are looking to raise 2 crores for 6% equity. Yes, 2.3 crores for 6%. यही बोला। How did you come to this number? हाँ, 2 करोड़ क्यों चाहिए पहली बात तो, और वैल्यूएशन जो आपने अपनी कर ली 35 करोड़ 35 करोड़ और सो, वो why that? That's my question. So we would be using 35% of the investment for sales activity, which means we would be essentially, it will be like putting oil under an engine that's already working, which means the But sales. once you have an SBI and Indian bank, do you really need to put 670 lakhs for marketing? With our current team, if we can close 5 banks by the end of the year, with the investment and investing more in sales, we should be able to increase that number to 15 to 20. But at this point, you don't need 50 lakhs, more than 50 lakhs, and your valuation, in the best of my opinion, at this point, should not be more than 5 crores. महावीर जी, आप उन्हें राय दे रहे हैं या आप उन्हें किसी और नंबर पर लाना चाह रहे हैं? मुझे ये जरा सिंपल करके बता दें। मेरे को
आइडिया पसंद है, मुझे उनका डोमेन एक्सपर्टीज पसंद है, मुझे नॉलेज पसंद है। मैं सोचता हूँ कि हम 2-4 जने अगर मिलकर इन्वेस्ट करेंगे तो इनके लिए कई नए रास्ते खोल सकते हैं। निशा, जैसे क्रिकेट में होता है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट इज गिवन टू द बैट्समैन, तो ये हमारा बैट्समैन, हमने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है कि इसको अपनी स्पेस की जानकारी है और हम उस बात पर एक ऑफर देना चाहते हैं। महावीर जी कह रहे हैं वो एक ऑफर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छे गौर से सुनिए ये ऑफर को। So what I'm saying is that rather than 2 करोड़ लेके 35 करोड़ की वैल्यूएशन जो 5 साल में आप अचीव करेंगे, उस अचीव करने से बेटर है आपको ब्रेक डाउन करके अभी 10% देके 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे 50 लाख लेने चाहिए। ओपन न्यू डोर्स, ओपन न्यू, आपको मैं बता रहा हूँ मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। महावीर, ये ऑफर पे मैं अपनी तरफ से 5 से 7 बैंक लेके आ सकता हूँ अगर आप में कोई आप ये जो आप कर रहे हो और एसबीआई अगर वैलिडेटेड है, सी हमारी सब्जेक्टिव है 3 चीजों पे, आईपी है और टेक्नोलॉजी जो आप कह रहे हो वो है, हम जो कह रहे हैं वो उससे ज्यादा है। नंबर 2, एसबीआई का साइंड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है। नंबर 3 कि आप जो मार्केटिंग आपको खर्च करनी नहीं पड़ेगी, वो हम आपके लिए दरवाजे कनेक्ट खोल देंगे, ले आएंगे। चाहे बैंक हो, चाहे मीडिया हो, इंग्लिश मीडिया, चाहे एडटेक हो, चाहे जुडिशरी हो, अगर वो आपको समझ में आता है तो हम स्ट्रेटेजिकली हम में से 3 या 4 या 2 जने आने को तैयार। इससे पहले कि आगे बढ़ जाएं कि कौन कौन आने को तैयार है, ये जरा क्लियर भी कर लेना चाहिए। दीक्षा, आर यू इन और यू आर आउट? No, I will be out of this. अंकिता, आप? I am out. तो अभी 3 हॉर्सेस इंटरेस्टेड हैं, तो अब बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। Would you be willing to do 75 lakhs for? Do you need 75 lakh? Why do you want to dilute more? That's my question. अच्छा मेरी बात सुनो, हमने एक बार 50 लाख दे दिए, 5 करोड़ दे दिए और 6 महीने में हमको लगा कि ये रेवेन्यू आ रहा है और ये रास्ते खुल रहे हैं, तो 25 लाख क्या चीज होती है? It's not a problem to put in the money, but right now because proof of concept ही आपका this thing है, एक minimum viable product ही आपने बस ऐसे present किया है and we don't understand what it is. That's why we're not willing to bet more right now. If you don't mind me asking, I would love to clarify what you don't understand. इस एपिसोड की हमने शुरुआत की थी ये कह के कि हम दिल से इन्वेस्ट करते हैं या दिमाग से, और महावीर जी ने कहा था हम गट से कर रहे हैं। ये हमारा एक गट है कि आप जो कर रहे हैं सही है, हमें लगता है कि हमारे साथ अगर आप पार्टनर करेंगे तो हम इसको और बड़ा कर सकेंगे। उस गट फीलिंग पे हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं। ये एक बाइंडिंग नॉन नेगोशिएबल ऑफर है हमारी तरफ से, टेक इट और लीव इट। Would you be willing to go below 10% for the same 50 lakh? Like I said, Vishnu, I am not playing games here. All right. Can I have a couple of minutes to think it through? Yes, Sure. and Yeah, in fact, Vishnu, we would like to offer you to discuss it with Dr. Bindra. He can guide you if it is the best deal for you. He would like to talk to you in private. Okay, I can see Vishnu is back. I think Dr. Bindra से वो guidance लेकर वापस आए हैं. Have you been able to make up your mind? डॉक्टर बिंद्रा ने आपको गाइड कर दिया है, सीक्रेट सलाह ले ली आपने, या अभी भी किसी और से राय लेना बाकी है? No, I think I have enough information I need. Horses, what I would propose is a 25 lakh investment at this point at a 5 crore valuation, which is 25 lakhs for 5%. Once we are able to close patents and once we are able to prove that we can go after markets and effectively service them and generate revenue based on mutually agreed upon milestones, I would like to ask for another 25 lakhs investment at a later stage at a 15 crore valuation. Would you be interested in something Without knowing the milestones and without knowing the numbers, how can you come up with a 15 crore number? That's my question. You are a technical person and we are a business people. जो अपनी अपनी डोमेन है वो अपनी अपनी डोमेन है. You want to dilute less and can't get a higher valuation, you're breaking it up, it's fine. But वो 25 लाख का अभी क्लोज नहीं होगा, वो तब का तब देखेंगे. क्या पता 15 करोड़ की जगह 20 करोड़ हो, क्या पता 10 ही करोड़ हो. 5 करोड़ 25 lakhs डन. नेक्स्ट माइलस्टोन व्हाटएवर हैपेंस, 25 क्यों 50 लाख चाहिए हो, 1 करोड़ चाहिए हो, वी एग्री ऑन दोस टर्म्स एंड वैल्यूएशन, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट हो, हम को इन्वेस्ट करें, नो प्रॉब्लम. बट माइलस्टोन अभी तय करना और वैल्यूएशन अभी बढ़ा के देना, आई विल नॉट कमिट दैट. मोहित. No, I agree with that. Also, since you got this offer, now I'm going to give you a counter offer. I want the 4% from Triple IT at the same 5 crore valuation. Then I'll come in. There's a percentage ownership I want of the company. I want you to structure a secondary with Triple IT at the 5 crore valuation. I Would would Triple have IT exit at this valuation? That's नहीं, not full. उनका 8% है. 4%. मैं 4 लेना चाहता हूँ. अरे. आपके लिए भी अच्छा है. आप डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं. आपका कैपिटल साफ हो रहा है. Ask your professor what I am on that cap table. Your largest company at Triple IT
who's been funded the highest amount of money, I'm the one who took it there. Ask them what is my value addition and are they willing to sell me today or not? I'm okay with that. I would have to talk to the That's fine. stakeholders. That's fine. But you'll do that for me, right? I can do it, but I can't assure that they will be okay. Ah, you will try. Yeah, that's Yeah, a you'll later. try. I just- Try. you'll That's try. right. Push for it, Try. definitely. That's an addition I will to definitely this. push for it. I'm okay That's an with that. addition to this 25. मोहित के मुंह से आई निकल गया, वो हमारा वी चल रहा है एक्चुअली, बट तो बात नहीं, बच्चा है, मैं माफ कर सकता हूँ। नहीं, ट्रिपल आईटी में आप खरीदना चाहते हो सेकेंडरी? क्यों नहीं खरीदूंगा? हाँ जी, तो वी है, 50 लाख दे रहे थे। सॉरी, मेरी गलती, वी, हाँ। मेरी गलती, सॉरी। मेरे और दर्शकों के लिए हमें समझा दीजिए, इफ इट्स अ डील और अ नो डील। इट्स अ डील जिसमें 25 लाख तो हम सीधा दे रहे हैं कंपनी Okay. में डायरेक्टली, क्योंकि 25 लाख बहुत कम है हम 3 लोगों के लिए, 3 बड़े हॉर्सेज हैं यहाँ पर। हम अनदर 25 लाख का एक ऑफर देंगे इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। ठीक है। उनको कहेंगे कि प्लीज आप अपना इतने अमाउंट का स्टेक हमें बेचिए। जिसके लिए इतना या उससे थोड़ा प्रिंसिपल अधिक। विष्णु अग्री कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ अपने जी। वो पार्टनर को कन्विंस करने Yes, की that's कोशिश right. करेंगे। Yes. इज दैट राइट विष्णु? Haan, so I have to convince the Triple IT, the stakeholders who are representing Triple IT's equity in this, I would have to convince them. So in principle, this is a deal, right? यस। Yes, from our side, it's a deal. Then it's a congratulations and a happy moment. No, but to Vishnu, the you've agreed partners. to this, right? Yes, 25 lakhs, we 5% agreed deal. to it. Perfect. Great, perfect. All right. Congratulations. Clap. काबू है मंजिल तेरे रूबरू है कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू है दोस्त तेरा बेकाबू है मंजिल तेरे रूबरू है कोशिशों की रफ्तार हूबहू है। All right, with that, it's a wrap on this episode. फिर होगी मुलाकात next week आपसे only on बड़ा बिजनेस presents Horses Table. जो जीता वही सिकंदर।